Hello students. So this is a video for sample questions, objective type, for your exam tomorrow of paper ENG 104. Let's see some of the questions. इस तरह के questions आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यही questions आएंगे, ऐसा नहीं है. So prepare accordingly. This is just to give you an idea of how the questions can be. So this question is, what is the central theme of Shakespeare's Let Me Not to the Marriage of True Minds? So theme पे based question हो सकते हैं. Offers are value of time, permanence of love, transience of power, all of the above. So those who have read the poem must be knowing that this poem is about permanence of love, that how true love is something that never dies, and it is not slave to time or even any of the obstacles that come in life. Similarly, most of Shakespeare's sonnets are addressed to a young man who is presumed to be. कौन है वो young man जिसको ये presumed है? So Earl of Southampton, Earl of Oxford, Earl of Surrey, Earl of Dorset. So his most of the sonnets are addressed to Henry Wriothesley, Earl of Southampton. So option A. In Duns, the sun rising, with what does the speaker say he could eclipse the sun's rays? So if you remember those lines, he says that I could eclipse your rays with a wink, with a wink of my eye. So option B. So similarly, ये context based question है या content based question है, कैसे उसमें जो पोएम में चीज़ें कही गई हैं उसके हिसाब से कैसे आंसर आपको करना पड़ेगा. फिर विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टर्म द स्पीकर यूजेस टू डिस्क्राइब द सन इन द सन राइजिंग. वो कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे नाउन्स यूज़ करता है सन को डिस्क्राइब करने के लिए. सो व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट ही यूजेस? अनरूली बोलता है, सॉसी, पेडेंटिक, रेच. सो सॉसी वर्ड बोलता है, रेच बोलता है, बट कावर्ड नहीं बोलता. So C, option C is the correct answer, that he does not use this term to describe the sun. What is the stanza form used in Alexander Pope's An Essay on Man? किस stanza form में लिखा है? तो obviously in the neoclassical times, Alexander Pope was most popular for writing in heroic couplets. You should know that. Elegy written in a country churchyard is believed to be inspired by the death of. किसकी death के response में कहा जाता है कि लिखी गई? तो Richard West, his friend Richard West. A. Then elegy written in the country churchyard is written in which meter? Again stanza form या metrical form पे question आ सकते हैं, तो ये इसके भी explanations पता होना चाहिए. So it is written in the most common form in English poetry, iambic pentameter. B. Identify the figure of speech in these lines. कौन सी figure of speech है? Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. ये lines elegy written in a country churchyard से ली गई हैं, और इसमें personification है because ambition जो है वो word capitalized है, and ambition है एक नॉन लिविंग एंटिटी है, क्वालिटी है, ह्यूमन फीचर है, बट उसको पर्सोनीफाई किया गया, उसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो कोई पर्सन हो जो मॉक कर रहा है उनको, रस्टिक्स को. सो बी. देन टू विच पोएट डस ग्रे कंपेयर द रस्टिक्स इन द पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड? कहता है ना कि सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हियर मे रेस्ट. सो ही कंपेयर्स देम टू मिल्टन. ही सेज अगर उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, अगर उनको वो सब फैसिलिटीज़ मिलती, वो सब उतने फॉर्चुनेट होते जितने कि शायद मिल्टन थे, तो शायद वो भी वैसे होता. सो जॉन मिल्टन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So again content based question. William Blake's The Tiger is a part of the collection title. किस collection में आती है? तो टाइगर जो है, और एक टाइगर पोएम और दूसरा लैम्प पोएम्स. तो टाइगर is a part of the collection titled Songs of Experience. Lamb is a part of his collection entitled Songs of Innocence. So Songs of Experience is this one particular work where you can find this. So option B. Then what qualities of the tiger does William Blake's The Tiger celebrate? क्या उसकी qualities हैं जिसको ये celebrate करते हैं? तो strength, physique, rage और all of the above. ऐसे कौन सी qualities है? So in the poem he says that the tiger is very strong, it is very mighty, it is having a great structure, that is physique, and it has fire inside it, that is rage. तो ये सारी qualities हैं, इसीलिए all of the above. Then identify the figure of speech in the following lines again. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance.
डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम, उससे ये लाइन्स ली गई हैं. 10,000 I saw means all of these daffodils that were there are given a number, random number 10,000. Now he has not counted them. It only means to say that there were a lot of daffodils there. So that means एक hyperbole है ये, है ना. ज़रूरत से बहुत ज़्यादा उस नंबर को बताना, तो hyperbole, है ना. So that is why you must know all the figures of speech. Basic figures of speech के बारे में तो पता होना चाहिए. हाइपरबोल, साइनेक्डोशी, पर्सोनिफिकेशन, मेटोनिमी, कैसे वो पोएम्स में यूज़ हुई हैं. सो ये एक एग्जैजरेशन है ना, कि 10,000 नंबर देखना. एग्जैक्टली ही डिड नॉट काउंट बट ही सेज दैट. सो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है जिसको लिटरली आपको नहीं लेना. 10,000 डज नॉट मीन कि एग्जैक्टली 10,000 है. वर्ड्सवर्थ्स डैफोडिल्स वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, किस ईयर में जो डैफोडिल्स पोएम है वो पब्लिश हुई थी. इसका एक टाइटल और है, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. तो आपको वो भी पता होना चाहिए, जो कि इसकी फर्स्ट लाइन भी है. उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये पोएम दोनों तरह से जानी जाती है. एंड इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1807. Similarly, who coined the term negative capability? To mean a state when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने टर्म कॉइन किया है? सो बेसिकली ये टर्म जॉन कीट्स ने कॉइन किया है. और उससे उनका बेसिकली नेगेटिव कैपेबिलिटी से जो मीनिंग है वो ये है कि एक पर्सन जो है या एक राइटर जो है वो खुद में उसके डाउट्स हो सकते हैं, उसके अपनी मिस्ट्रीज, टेंशन्स हो सकती हैं, बट उसके अलावा भी उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि उसको यूज़ करके वो ग्रेट पोइट्री क्रिएट कर सके विदाउट all of that, and that is his negative capability. So Ode to a Nightingale is also an example जिसमें वो अपने पूरे senses में नहीं है, but he is writing that poem, है ना. Then what is the central theme of Keats's Ode to a Nightingale? The Nightingale song is the most pleasurable experience. नहीं, ये नहीं बोलता कि it is the most pleasurable experience on earth. Human beings can be immortal through their works. Human beings immortal बन सकते हैं, ये भी उस पोएम में नहीं कहा है. Death is an unavoidable part of life. Yes. लास्ट स्टैंजा में बोलता है adieu go, है ना, go away, because he knows that of course that song is very pleasurable and all, but it is an imaginary state of being, and उसकी real conditions जो realities हैं वो actually में थोड़ा harsh है. So that means C is basically the correct option. Death is an unavoidable part of life, and Nightingale's song provides permanent escape from life's troubles. ऐसा नहीं, permanent escape नहीं, वो थोड़ी देर के लिए उसको relief देते हैं, but otherwise नहीं. From which poem are the following lines taken? Forlorn, the very world is like a bell to toll me back from thee to my soul's self. So again, forlorn means, again these lines are taken from Ode to a Nightingale, and he says, I am very sad because this is like a bell. That's word which basically it means that a feeling of very deep sadness or loneliness. And I feel that why? Because your pleasurable song is not enough to keep me happy forever. So sometime or the other this illusion will break. So that is why Ode to a Nightingale is the point. Which of these is true regarding dramatic monologue? What is it? So it is basically a poem in the form of a speech that reveals the speaker's character. And C option क्यों नहीं होगा? Because इसमें स्पीकर और लिसनर के बीच में कोई डायलॉग नहीं होता. लिसनर इज प्रेजेंट बट ही इज़ साइलेंट, एंड वी नो अबाउट हिज प्रेजेंस थ्रू द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर itself. So that is why B is the correct option. What is a story or a poem that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or a political one? Allegory. Allegory basically ऐसी एक टेल होती है जो कि कुछ moral या hidden meaning जो उसमें होता है. So that is why. What is a pastoral elegy? A pastoral elegy is a poem about death and peaceful rural life, or peaceful elements, settings, idyllic setting of a rural life. So B is again correct answer. What is the term used to describe a sonnet with 3 quatrains and a concluding couplet? So 3 quatrains जिसमें होते हैं और यानी 4 lines के segments और concluding 2 lines का couplet, वो basically होती है शेक्सपियरन सोनेट. पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है? 8 लाइन्स का सेट होता है ऑक्टेव, और एक सेस्टेट होता है 6 लाइन्स का. बेसिकली 14 लाइन्स टोटल दोनों में होंगी, बट शेक्सपियरन सोनेट में 3 क्वार्टरेंस होंगी और एक कपलेट होगा.
सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. थीम बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैरेक्टर पे ऊपर हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे हो सकते हैं, या कब पब्लिश हुआ था कोई वर्क, राइटर को कोई अवार्ड मिला है तो इस तरह का, या किस कलेक्शन में पब्लिश हुई कौन सी पोएम, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो कीप दैट इन माइंड एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो गुड लक, ऑल द बेस्ट.